Hi, my dear students. Myself, AB sir, physics faculty. We discussed in last class gravitation, basic forces in nature, Newton's law of gravitational force, some applications. Now, today I am going to do some problems on Newton's law of gravitational force. Let us take a right angle triangle. I take here 3 points. I consider 3 points A, B, C. At A, I take 36 m. At B, small m. At C, 64 m. Now, distance between AB is equal to, I take 6d. Between B and C, I take distance is equal to 80d. Now, question asked that find the net gravitational force at a small m. Let us take between A and B, force is equal to F1. Between B and C, its force is equal to F2. I write F1 is equal to G into small m 36m divided by distance between them 36d square. F2 is equal to G small m 64m divided by 8d whole square, 64d square. 64 cancel, 36 cancel. That means G small m capital M by d square, G small m capital M by d square. That means F1 is equal to F2. जितना F1 है उतना F2 है. F1 is equal to F2 is equal to F. Okay, na? These two are perpendicular to each other. If two are perpendicular to each other, then we can write here Fr is equal to square root of F1 square plus F2 square. F1 is equal to F2, no? That is equal to root 2 into F. Fr is equal to root 2 into G into small m into capital M by d square. So this is first question. Next. Second one. Let us take question number 2. Let us take a equilateral triangle. In an equilateral triangle, all the sides are same. Now I consider here small m, capital M, and here also capital M. In an equilateral triangle, all the sides are same. Now we have to find out net gravitational force at small m. Between them, gravitational force is equal to F1. Between them, gravitational force is equal to F2. And between F1 and F2, angle is equal to 60 degrees. Let us take F1 is equal to G into small m capital M divided by d square. F2 is equal to G into small m capital M by d square. F1 is equal to F2 is equal to F. Angle between F and F2 is equal to 60 degrees. Then here resultant force is equal to Fr is equal to square root of F1 square plus F2 square plus 2
F1, F2 cos 60 degrees. Angle between F1 F2 is equal to 60 degrees. Fr is equal to root of F square plus F square plus 2F square cos 60 1 by 2. Then I write here Fr is equal to root 3 into F. Fr is equal to root 3 into G into small m into capital M by D square. This is the final answer. Okay. Next. बेटा ग्रेविटेशन इजी रहेगा, वेरी इजी, डेड इजी रहेगा अगर ग्रेविटेशन आता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी 80% तक हो जाता है. लेट अस टेक थर्ड वन. I consider a equilateral triangle. In this equilateral triangle, let us take I take three particle whose mass capital M I take are the vertices of a equilateral triangle. I take in between these two M a small mass M. Now our aim, we have to find out the net gravitational force at small m. Let us take, if it is an equilateral triangle, all the sides are same, then I write like this. In that question, he asked that net gravitational force at M. That means between these two, gravitational force is in this direction, gravitational force is in this direction. Between these two, gravitational force is in this direction. मैंने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज स्मॉल एम टू कैपिटल एम के बीच में रहता है और ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर ऐसे रहता है. ये वाला फोर्स दोनों कैंसिल होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ओनली सिर्फ इन दोनों के बीच में ही रहेगा. Two masses are there. If you able to find out, then you can find out the gravitational force between them. So due to that reason, I take this distance is equal to y. Now this is right angle triangle. In this right angle triangle, can I write d square is equal to y square plus d by 2 whole square, d square by 4. I take this one left side. D square minus d square by 4 is equal to y square. Cross multiplication. 3d square by 4 is equal to y square and y is equal to root 3 by 2 into d. Okay. Now मेरे पास यहां पर डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स है, तो मैं फोर्स अप्लाई करूंगा. F is equal to g into small m into capital M by डिस्टेंस आ गए root 3 by 2 whole square. That means root 3 by 2 whole square कितना होगा 3 by 4 d square. That means F is equal to g into small m into capital M by 3 by 4. ये 4 यहां लिखूंगा d square. This is the final answer. What is the final answer here? F is equal to 4 by 3 g small m capital M by d square. This is final answer. Okay. Next. Let us take one more question. मैं वन मोर क्वेश्चन को कंसिडर करूंगा यहां पर. फोर्थ क्वेश्चन. Let us take one more equilateral triangle. Now this time I take the small m here, capital M, and here capital M. Okay. I take
4 masses, I arrange that 4 masses like this. 3 capital M's, 1 small m. My aim, I have to find out the net gravitational force at small m. अभी देखो क्या होता है, इन दोनों के बीच में फोर्स रहता है, इन दोनों के बीच में फोर्स रहता है, इन दोनों के बीच में फोर्स रहता है, ओके ना। अभी मैं काम करूंगा, मैं सारे फोर्स को एक साइड लेकर आऊंगा. आई टेक ऑल द फोर्सेस एट वन पॉइंट. If it is equal to triangle, if it is 60 degrees, this angle is equal to 30 degrees. This angle is equal to 30 degrees. From here to here 60 degrees. I divided this one 30, 30. Now let us take इन दोनों के बीच में का फोर्स, I take F1. इन दोनों के बीच में का फोर्स F1. I resolve this F1 into two components, F cos theta, F sin theta. F1 cos 30 degrees, F1 sin 30 degrees. Resolution of a vector. इसके लिए अगर मैं F1 लेता हूं तो इसको थोड़ी देर के लिए इसको F2 समझो, क्योंकि जितना फोर्स यहां पर है उतना फोर्स यहां भी रहेगा. Then I take here F2 cos 30 degrees and I write this one as F2 sin 30 degrees. Okay? Between these two masses, one more force will be there, that is F3. That means F1, F2, F3 all are in the same direction. This force and this force is going to be cancelled. Now let us take first F1. F1 is equal to G into small m capital M by D square. This F1. And F2 is equal to G small m capital M by D square. That means F1 is equal to F2. F3 is equal to, हमने अभी निकाला था सेम वन, G small m capital M by, इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस √3/2 into D. That means 3D square by 4. As I, all the forces are in the same direction. That means resultant force is equal to Fr is equal to F1 cos 30 degrees, F2 cos 30 degrees and F3. जितना F1 है उतना F2 भी है. That means can I write 2 into F into cos theta, 2 into F into cos 30 degrees plus F3, 2 into G into small m into capital M divided by F जितना दिया है बोलो, D स्क्वायर दिया है. I write the D square. Cos 30 is √3/2. √3/2. F1 जितना है F2 भी उतना है. F1 is G by D square. F2 is equal to G by D square. F1 is equal to F2. We can write here F1 F2 is equal to F2. Due to that reason, I write here 2 into F into cos 30 plus F3 का वैल्यू रहेगा, F3 का वैल्यू रहेगा, ये वाले रहेगा. That means I write here 4/3 G small m capital M by D square. तो यहां 2 और 2 कैंसिल हुआ, जो कॉमन आता है उसको कॉमन निकालो. Fr is equal to √3 plus 4/3 into G small m capital M by D square. ये था फाइनल आंसर इसके लिए. दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस वन. ओके, नेक्स्ट. बेटा जैसा पढ़ाता हूं वैसा एक बुक लेकर जो कुछ भी क्वेश्चंस मैं लेता हूं उस क्वेश्चंस को आप एक पेज में कॉपी करो, सो दैट यू कैन गेट more knowledge about this one. Now I take next question, fifth question. Now by this time I take here one square.
मैं एक स्क्वायर को कंसिडर करूंगा. आई नेम दिस वन एज ए बी सी डी. लेट अस टेक ए स्क्वायर. एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर I take all identical masses. All the sides are same. My aim, I have to find out the net gravitational force at any one corner. तो मैं समझूंगा यहां पर नेट फोर्स निकालूंगा मैं. ओके ना. बिटवीन देम वन फोर्स विल बी देयर. आई टेक दिस वन एज एफ. जितना फोर्स ये है उतना फोर्स यहां भी रहेगा. तो मैं यहां पर इनिशियल स्टेज में F1 लूंगा और ये इसको F2 लिखूं. एंड ये मास और ये मास के बीच में एक फोर्स रहेगा. आई राइट दिस वन एज F3. ओके ना. बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स. व्हेन यू सॉल्व दिस वन, द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 इज इक्वल टू F डैश. F डैश. सो this F dash and F3 both are in the same direction. That means resultant force is in the same direction. Based on that one, F1 is equal to G into M square by A square. This force. F2 is equal to G into M square by A square. F1 is equal to F2. F1 is equal to F2. Is equal to F. That means resultant of these two forces is equal to square root of F1 square plus F2 square. That is equal to root 2 into F. Root 2 into F. मैं एक काम करूंगा. ये है और ये है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा बेटा? दिस इज वन राइट एंगल ट्रायंगल. ये तो हाइपोटेनस है. ऐसा लग रहा है ना तुम्हें? डायगोनल दिख रहा है ना. ये और ये रहा, तो ये कितना रहेगा? रूट 2 इंटू ये रहेगा. तो F3 के लिए मैं ऐसे लिखूंगा F3 इज इक्वल टू G स्मॉल n इंटू M डिवाइडेड बाय रूट 2 इंटू ये होल स्क्वायर. नो F3 मेरे पास है, F डैश मेरे पास है, दोनों एक ही डायरेक्शन में. देन रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू, I write here F dash plus F3. F dash plus F3. F dash means root 2 into F plus F3 means this is also F. I write here 1 by 2 into F. Fr is equal to root 2 plus 1 by 2 into F. Fr is equal to root 2 plus 1 by 2 into F means G M square divided by E square. अगर मास 2 kg दिया है, डिस्टेंस भी 2 मीटर है, तो 2 स्क्वायर 4 कैंसल होगा. रूट 2 का वैल्यू 1.414, समझो 1.4 लिया मैंने. 1 by 2 का वैल्यू 0.5 है. 1.4 plus 0.5 is equal 1.9. That means Fr is equal to 1.9 into G. Nearly equal to 2G. G का वैल्यू जो भी है 6.67 into 10⁻11 सब्स्टिट्यूट करो, उसका आंसर आता है. नहीं बोले तो ऑलमोस्ट ऐसा ही देगा वो. अगर दिया होगा तो 2 into G, 1 into G, 4 into G, 3 into G, उसमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है. दिस इज 5th क्वेश्चन. Next, let us take next question. 6th one. मैं ऐसा करूंगा अभी, एक काम करूंगा. Now moving on to the next type problem. Let us take 2 spheres made with the same material. 2 spheres made with the same material. If it is made iron, this is also made with iron. If it is made with copper, this is also made with the copper. 2 spheres made with the same material having mass m and m, and they are arranged in such a way that they are in contact with each other externally. The radius of each sphere is equal to r.
Now question is how gravitational force varies with respect to that radius, ऐसा पूछा है बेटा। कभी भी क्वेश्चन में मटेरियल के बारे में पूछता है तो डेंसिटी के बारे में पूछता है वो इनडायरेक्टली। डेंसिटी इज इक्वल मास बाय वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 4r²। Can I substitute this m value here? Then f is equal to g d 4/3 pi r cube whole square. This becomes 6 by 4r². r² cancel. We know that g constant, density constant, 4/3 pi is also constant. Now question is how gravitational force varies with respect to that radius. That means f is directly proportional to r⁴। अगर सेम क्वेश्चन ऐसा पूछा तुम्हें, if these two spheres are separated by the large distance, अगर ऐसा पूछा तुम्हें क्वेश्चन में, same material, same mass, same radius, but they are separated with a large distance, then how gravitational force varies with radius? I write here f is equal to g into m divided by this time distance is equal to d square. That means the distance between them is equal to d. Okay ना? सेम m वैल्यू वहां पुट करूंगा मैं, तो f is equal to g into m स्क्वायर है ना, वो प्लेस में ये लिखूंगा मैं d स्क्वायर 4/3 पाई होल स्क्वायर r⁴। ये सब तो कांस्टेंट है, ये तो डेंसिटी है, ये डेंसिटी है और ये डिस्टेंस है, ये सब कांस्टेंट है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ फोर्स वेरीज विद रेस्पेक्ट टू दैट रेडियस। दैट मींस f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴। अगर ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस दिखाना है तो ऐसे दिखा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा, कुछ बोर्ड हल रहा है इसलिए कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। अगर नेक्स्ट क्लास से देखता हूं उसको कुछ करने के लिए। नेक्स्ट आई टेक वन मोर क्वेश्चन। Eighth question. In that eighth question, it is asked that let us take one equilateral triangle. Three masses are arranged at the vertices of equilateral triangle. Three masses are arranged at the equilateral triangle. Of each side is equal to a. Okay na? Now the system is rotated along the circumference of the circle, maintaining the equilateral triangle as same. If the system is orbiting the circle by maintaining the equilateral triangle as the same, then what should be the speed of the each particle? ऐसा क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है क्वेश्चन ने? Three particles each of mass m are arranged at the vertices of equilateral triangle of side A. Now if the system of three masses are orbiting around the circle by maintaining the equilateral triangle same, then what is the speed of the each particle? ऐसा पूछा है। Now think that this system is moving in the form of the circle. Assume that this system is moving in the form of the circle. ऐसा मूव कर रहा है। Each particle should move with the same speed. Okay ना? Now we have to find out what is the speed of the each particle. ऐसे निकालना है। Now let us take speed of the each particle. मैं एक काम करता हूं बेटा, याद रखो कभी भी हो, as a particle is moving the circle, centripetal force acting towards the center,
The centripetal force balance the gravitational force. Centripetal force balance the tension in the string. Centripetal force balance the friction. Centripetal force balance the electrostatic force. Now in this case centripetal force balance the gravitational force. तो एक काम करता हूं मैं, एक पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स निकालता हूं, उस फोर्स को मैं सेंट्रिपेटल फोर्स से बैलेंस करता हूं. Let us take at this point I am going to find out the net force. That means between them, let us take one force, between them I take one force. Okay? इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स यहां पर रहेगा डेफिनेटली, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, and for this center I take here, this is balanced by that centripetal force. Resultant force balance the centripetal force. वो कॉन्सेप्ट से मैं एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकता हूं, लीनियर वेलोसिटी निकाल सकता हूं, टाइम पीरियड भी निकाल सकता हूं. देखेंगे क्या क्या होता है. F1 is equal to, let us say this is F1, this is F1 and this is F2. F1 is equal to G into m square by a square. F2 is equal to G into m square by a square. Fr is equal to square root of F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos 60 degrees. Okay na? That is equal to square root of F square plus F square plus 2F square cos 60 degrees 1 by 2. कैंसल हुआ तो रिजल्टेंट फोर्स मुझे मिला √3 into F. This resultant force balance the centripetal force. That means Fc is equal to Fr. अगर तुम्हें लीनियर वेलोसिटी चाहिए तो mv square by r लिखो. That is equal to √3 into g into m square by a square. अब क्वेश्चन है, यहां तो r है, यहां तो ये है, either you have to convert this one into a or this one into r. तो मैं काम करता हूं, ये r को ये में कन्वर्ट कर लेता हूं. मैं ये रेडियस ऑफ द सर्कल r को, रेडियस ऑफ द सर्कल r को मैं ये में कन्वर्ट कर लेता हूं. नाउ इफ इट इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल, दैट मींस इसका डायगोनल, इसका डायगोनल, इसका डायगोनल यहां पर मीट होता है ना. अगर ये है तो ये a/2 रहेगा. ओके ना. तो ये 60 डिग्रीज है तो 30 डिग्रीज होगा. तो मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो दिस वन बाय दिस वन आई टेक. cos 30 डिग्रीज इज इक्वल टू a/2 by r. cos 30 बताओ कितना होगा. cos 30 √3 by 2 a by 2r. 2 cancel. r is equal to a by √3. that means r can be written as in terms of a by √3. ये प्लेस में मैं a by √3 को पुट करूंगा. मैं याद रखो, कभी भी इक्विवेलेंट ट्रायंगल आता है, सेंटर से कॉर्नर को निकालने के लिए डिस्टेंस r इज इक्वल क्या होगा, a by √3 होगा. देन आई राइट हियर a by √3. √3 m v square divided by a. √3 g m square by a square. √3 cancel, m cancel, a cancel. v is equal to square root of gm by a. अगर यही कॉन्सेप्ट में अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तुम्हें, एंगुलर वेलोसिटी, तो आप यहां पर m r ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, या v इज इक्वल टू r ओमेगा बोल के लिख सकते हो. v इज इक्वल r ओमेगा, v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g by m. r means a by √3. that means I write a by √3 into omega, that is equal to square root of gm by e. Okay, then if you want omega, then do cross multiplication, simplification, then you get the answer.
ओके ना। तो ये 8th क्वेश्चन था। देन आई स्टॉप दिस वन टुडे एंड कमिंग ऑन टू दैट नेक्स्ट क्लास आई डू द मोर प्रॉब्लम्स। ओके, तो इतने दिन लेट होने के एक वजह है, तो बोर्ड कुछ हल रहा था, कुछ डिस्टर्बेंस था, तो इसलिए मैंने नहीं किया। तो आने वाले क्लासेस में डेफिनेटली आई डू समथिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच।